स्वागत है दोस्तों आप लोगों का शेरलॉक होम्स डेविल डॉटर्स के एपिसोड 3 में। मैं हूं आप लोगों का दोस्त शुभंकर। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पिछले दिन हमने यहाँ तक गेम को छोड़ा था, तो अभी देख सकते हो शेरलॉक होम्स यहाँ पर जो है ये फ्लावर वास और ये सब तोड़ के प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये किसी की चिट्ठी है, पढ़ते। मिस्टर अच्छा, इट इज़ डॉक्टर रूबन फिशर, डू यू रिमेंबर मी? आई मस्ट कन्फेस आई एडमायर यू acumen and bravery in uncovering our educational program. अच्छा, ओके, but we chose the lesser evil, don't you see? It was all for a greater, brighter future. We needed to sacrifice few to help the majority. Sincere, Dr. Ruben Fisher. अच्छा, क्लब जाना है। चलो, अच्छा, टेक पार्ट इन द फाइनल ऑफ द लॉन बॉलिंग टूर्नामेंट। अच्छा ठीक है, लॉन बॉलिंग टूर्नामेंट के फाइनल में हमें टेक पार्ट करना है। तो हमने, जैसे मुझे याद है, अगर पिछले एपिसोड में हमें कहा गया था कि हमें तैयार होना है मैं गेम के लिए, तो ठीक है, उसके लिए तैयार हो जाते हैं। सेलर आउटफिट, फेस्टिव, डॉक्टर, बैंडिट, पेस्टर, ओके, स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स आउटफिट, ओके। और मेकअप टेबल पे कुछ करना है क्या? बाल में ये नंबर 5 वाला हेयर कट मुझे अच्छा लग रहा था। ये वाला ठीक है। बाप रे बाप, इतने सारे फेशियल हेयर्स, कौन सा रखूँ कौन सा ना रखूँ, समझ ही नहीं आ रहा। शायद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो यही सिलेक्ट कर लेते। नहीं, ज़रूरत नहीं यार, अभी की अभी थोड़ा गेम खेलने जा रहे हैं, छुपने थोड़ी जा रहे। वहाँ पर तो ऑलमोस्ट सभी शर्लॉक होम्स को जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। बैल्कनी से एक बार थोड़ी देर बाहर देख लेते। तो ये नीचे का स्ट्रीट, यहाँ पर लोग देख सकते हो जा रहे हैं इस तरफ से उस तरफ, और उस तरफ एक और रूम है। ठीक है, चलो निकलते। कम ऑन मिस्टर डॉक्टर वाटसन, चलो क्लब चलते हैं अभी। Mr. Holmes, you played very well yesterday. I'm obliged to you, Sir Charles. I play many outdoor sports. That's the key to my success. My friend Dr. Watson has decided to join me. Really. Mr. Holmes, would you like to see the first prize? A rare stone Mayan Quiche calendar. Mayan Quiche? Indeed. Their legendary king, Tekun Uman, has his statue just behind you. Although this one is a cast metal copy. That? Well, since only members may enter the clubhouse, we have exhibited the calendar outside. Please explore. I'd like to win the Mayan calendar. It's a beautiful work of art. बहुत ही बड़ा क्लब है दोस्तों, और इंग्लिश लोगों का क्लब ऐसा ही होता है। बहुत सारे क्लब्स हैं हमारे शहरों में भी है, जहाँ जो क्लब्स ब्रिटिश ज़माने से चले आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्लब्स Mr. हैं। Holmes, I'm glad you are my opponent for the final. People call me Arthur the Invincible. So I wish you good luck. Mr. Holmes, I'm glad you are my Mr. Holmes, इनसे एक बार दोबारा बात are कर you लेते ready to हैं। begin the final game? I still need some time. नहीं ठीक है, एक बार घूम के Good luck, देख लेते Holmes. थोड़ा और।
और ये तो I डॉक्टर lost the वाटसन है। quarterfinals, but the greenies were it. इस तरफ तो कुछ नहीं है। ये टाइम का थोड़ा पता नहीं चल रहा, लगता है क्या थोड़ा शाम का टाइम हो सकता है शायद, एकदम शाम का तो नहीं, थोड़ा सा शायद। The first prize, अच्छा है, the Mayan Quiche calendar. ठीक है। तो ये दोस्तों फर्स्ट प्राइज है मायन कुची कैलेंडर, और ये देख सकते हो ग्रामाफोन बज रहा है। GTA 5 होता तो इन लोगों से धक्का लग जाता, लेकिन यहाँ पर वैसे This नहीं बनाया statue is made इसको। of metal. The statue of Takunu Man. The statue of Takunu Man. ठेकुनुमान, ओके। बहुत ही बड़ा क्लब है यार। यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ ठीक है, बहुत सारे ये देख सकते हो, इतनी सारी कारीगरियाँ भी बनाया हुआ है इन पत्थरों पे, देख सकते हो कितनी ज़्यादा ड्राइंग्स किया है। चलो ऊपर जाके देखते हैं एक बार, थोड़ा सा कारीगरी भी की गई है। हाँ, ये बहुत Only पुराने club members ज़माने have का है, access. तो क्लब मेंबर्स के अलावा जो है इसके अंदर कोई घुस नहीं सकता। यहाँ पर ये सीटिंग एरिया, यहाँ पर बैठ के लोग यहाँ पर खेल एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो क्लब तो घूमना हो गया दोस्तों, जितना घुमा दिखाना था दिखा चुका हूँ। तो अभी चलो गेम स्टार्ट करते हैं, चलो। तो ये क्लब सेक्रेटरी से मिलते हैं। So, are you ready now? Yes. Let's start the final. लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बिगिन गेम, ओके ओके, ठीक है। ओके, देखते हैं कितना दूर जाता है। ये मेरा ओपोनेंट है। ठीक है, क्या बात है यार, इसने वाइट को जाकर टक्कर मार दिया। ओहो, लोग क्लैप्स कर रहे हैं यार, इससे तो इतना अच्छा खेला नहीं जा रहा। कम ऑन, ये उससे भी आगे चला गया। ठीक है, मेरा फाइनल दाव। नहीं 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 नहीं, बाहर नहीं। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक लाइन पे गया है।
क्या बात है, शर्लॉक होम्स 1 वो 0। नेक्स्ट राउंड। खेलने में मज़ा आ रहा है नहीं बोलूँगा दोस्तों, एवरेज सा गेम है, इतना ज़्यादा मज़ा तो नहीं आ रहा। ये इस राउंड 2 में अच्छा खेल रहा है, मुझे और ज़ोर से मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं आगे हूँ। अभी 2 राउंड्स और बचे हैं। क्या बात है यार, पिछली बार भी निशाना लगाया था मेरा, रेड बॉल जो है वाइट बॉल को जाके लगा था, तो इस पर भी रेड बॉल जो है वाइट बॉल को जाके लग गया। इसका तो एक बार बॉल किसी से लग ही नहीं रहा। नहीं, अरे जल्दी फेंकना। हाँ ठीक है, चलो। नहीं जाएगा। क्या बात है यार, 3 शर्लॉक होम्स 3 वो 0 बस। नेक्स्ट राउंड, राउंड 3। यार थोड़ा और आगे जा सकता था। चला गया, चलो। क्या बात है, मेरे पास लीड है। क्या बात है यार, इसने फिर से जाकर वाइट को मार दिया। मेरा टारगेट या तो यह गेम ऐसे तैयार किया गया कि एक ना एक शॉट जो शर्लॉक होम्स मारेगा वो वाइट बॉल को जाके लगेगा, या फिर ये मेरा पता नहीं अंदाजे से लग रहा है। शायद गेम ही ऐसे प्रोग्राम किया गया कि शर्लॉक होम्स का एक ना एक शॉट तो वैसे जाके लगेगा। ठीक है, जा। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, चला जाएगा 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 जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये सबसे आगे चला गया।
5। चलो तीनों राउंड ही Congratulations लगता है on हम your जीत game, गए। Mr. Holmes. Exceptional. The awards ceremony will be tomorrow morning. See you then to receive your prize of the calendar. I trust you will be there as well, Dr. Watson? Unfortunately, I'll be unable ये to कुछ attend समझ नहीं आया। duty calls. Ah, what a pity. Let's go home. ये क्या बात हुई भला? आज आज जीत गए और प्राइस कल See you देगा। tomorrow, Mr. हाँ, Holmes. See you tomorrow, Mr. Holmes. My congratulations, Mr. Holmes. तो इनके अगेंस्ट हम जीत गए थे, ठीक है। लेकिन यार बात समझ नहीं आई यार। मतलब गेम आज हुआ, मैं आज विनर बना और Congratulations, Mr. Holmes. प्राइजिंग सेरेमनी कर है। हाँ, Let's ये go क्या home. नियम है बता? ये कैसा नियम है यार? खेल आज हुआ और प्राइस कल। Those little sandwiches are अच्छा, delicious. क्या खा रहे ये? The first prize, the Mayan Quiche calendar. पता नहीं ये कौन सा डिश है, कुछ जाना माना डिश तो लग नहीं रहा। ये दोनों यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं। चलो बेकर स्ट्रीट। Oh, Daddy! Hello, Mr. Bouvier. Hello, Mr. Holmes. Well, Caitlin? Your costume! Oh, don't you like it? Oh, I do! Caitlin, come on. Show some respect for your father. Sherlock Holmes का ऑब्जर्वेशन। Imprecise character portrait. Alice is Sherlock Holmes' new neighbor. She is young and beautiful, and she seems to relate well to children, but she is still not married. The love token that she wears alludes to her connection with the criminal world. She wears unusual and eccentric You jewelry know, to attract Father, attention. Miss Alice was telling me all about her travels. She has already toured the world with her own father. Your daughter is exquisite. And just to think that she was aboard the Orient Express when it was attacked. What a dream! Indeed. She's so creative and imaginative. And that reminds me, would you allow Caitlin to visit me so that she can practice playing the piano? It's very kind of you, but I decided that Caitlin should stop playing the piano. Oh, Father, why did you say that? Caitlin, we are neighbours. We'll meet again. Until then, I shall leave you with this book. Thank you, Miss Alice.
ठीक है दोस्तों, हो गया हमारा काम, हमने ड्रेस कर लिया है। अच्छा, एग्जामिन मायन कैलेंडर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, Here it is. Maya civilization. The Mayan Empire centered in the tropical lowlands. The region, nowadays known as Guatemala, okay, had reached the peak of its power and influence around the 6th century AD. The Maya excelled यार agriculture, ये बहुत Maya. लंबा है यार, I can always consult with it if needed. और कुछ नहीं है। ये तो केट का कमरा है। ठीक है, चलो निकलते हैं अभी। ओह हाँ दोस्तों, बाय द वे आप लोगों को एक दिखाना चाहता था एक चीज़, शायद यहाँ पर होगा गेम प्ले में। अच्छा, लोडिंग इन कैब, ये जो ऑप्शन है ये अगर आप ऑन रखते हो तो जब आप जाओगे किसी जगह पे, जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, हाँ ठीक है, मुझे अभी जाना है क्लब, जैसे मैं क्लिक करूँगा क्लब तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये एक लोडिंग स्क्रीन आ जाता है। ठीक है, कोई क्लूज़ नहीं है, तो ये एक लोडिंग स्क्रीन आ जाता है कि शर्लॉक होम्स बुक पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। Statue did it. It killed Zacharias. Calm yourself now, Sir Charles. You've had a shock. Let the police do their duty. लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। Inspector like you do about it. You don't know anything. A mere inspector? Phew. And now here comes Mr. Holmes. Lestrade, are you here to receive a prize as well? Very amusing, Holmes. You can go home. The ceremony's been cancelled. We've got a murder scene here. Really? And to think I only came here for my prize. I know, Holmes. I saw your name on the list of finalists. So go away. You're not going to congratulate me? What? Do you really think I'm that naive? You turning up out of the blue and then bam, a murder? There's a surprise. Oh, you're making a spectacle of yourself, Lestrade. Let's just pretend that I'm a simple consultant, your humble assistant. Oh, all right then. A club member, Mr. Zacharias Greystoke, was killed at around 4 in the morning. There. Now don't mess around. I promise that I won't, Inspector. Did you search the clubhouse? What for? The murder took place outside. What do you make of the facts? It's quite clear. The murderer intended to steal the Mayan calendar. He was caught by Zacharias Greystoke. He then took up the first weapon that came to hand, the statue's spear, and killed Greystoke. Then he fled, just as Sir Charles was coming out of the club. Unfortunately, we've been unable to find any trail beyond the club's wall. It's as if the murderer vanished into thin air. Well, take a look for yourself. You're ये थोड़ा still here. मिस्टीरियस सा लगा सुन लेके। The iron ये देख mounting सकते हो। rod is broken. The surface is damaged. Traces of metal on stone. तो Traces यहाँ of पर जो है metal on मायन stone. कैलेंडर था। It looks like the statue broke away from its pedestal. A piece of the statue's mounting rod. Pieces from the pedestal. The statue of Takunu. तो ये यहाँ से टूट गया स्टैचू, और ये देख सकते हो डेड बॉडी इधर पड़ा है। उस तरफ से दीवार तोड़ के लगता है कोई भाग गया। This spear came from the statue on the pedestal. बाप रे बाप, पूरा का पूरा भाला Dry अंदर leaves. घुसा दिया यार। They make a noise. Zacharias probably walked across them. Money was left inside the wallet. तो जिसने भी मर्डर किया उसने ये तो पैसे के लिए तो नहीं किया, क्योंकि पैसा तो पॉकेट में पड़ा हुआ है। Zacharias's folder with ये some पेपर documents. किस लिए? These drawings represent the Mayan symbols.
उसकी The घड़ी case is scratched and dented. Tissot watch, Swiss, 1855. This watch is valuable and old. It's been through a great deal. All valuables इतनी were सारी left on कीमती the चीज़ें victim. The strike was powerful and well aimed. और At your क्या हो service, सकता है Mr. इससे Holmes. पूछते? If I believed Lestrade, this Mayan calendar was the reason behind the murder. सेक्रेटरी से पूछते? Sir Charles, are you able to tell me in detail what happened? Ah, Mr. Holmes. Well, to prepare for the awards ceremony, I decided to spend the night here at the club. I was sitting alone at my desk when I suddenly heard a loud, metallic sound and a terrible shout. I hurried outside and I found the body of Zacharias. And I swear it, I saw the statue of Tekun Uman running away. You saw the statue running? It was dark, but yes, I'm sure of it. It was running, and it was making the most horrible metal sound as it did so. And can't you see, the pedestal is now empty. Did you know the victim? Yes, of course. It was Zacharias Greystoke. He was a club member, and an excellent bowler. But why was he here so early in the morning? Oh, I don't know. इनका एक बार ऑब्जर्वेशन कर लेते। पीसीएस स्टोन बट पुअर क्वालिटी, ओके। Sir Charles, where did the Mayan calendar come from? It was donated anonymously. We received it shortly before the tournament, with a letter asking that it be awarded to the winner. Is the calendar valuable? Not really. It has historical value, of course. To be truthful with you, Mr. Holmes, it isn't worth very much. May I go in the clubhouse? It's members only. I cannot authorize anyone unless that person has a written warrant from the police. A murder at my club. What a disaster for our reputation. तो दोस्तों हमने तो देख लिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ था क्या? तो अभी क्लब हाउस में तो घुसने नहीं देंगे, वारंट चाहिए उसके लिए बोला है, तो देखते हैं क्या होता है। A broken branch. Somebody jumped into the tree and then over the wall. कल तक तो ये पेड़ ठीक था और दीवार भी ठीक था। डॉक्टर वाटसन नहीं पर रुका है। And what about the statue? No idea yet. I imagine a thief must have taken it somehow. Right, so they were thieves and they were very well equipped. Yes, must have been. Then there's also Sir Charles's version, but Please go on. he said this morning that he was alone at his desk when he heard a shout. He went outside and saw Greystoke lying on the ground and, believe it or not, he said that there was no one else on the green that night but the statue itself running away. You mean that the statue might have killed the victim? Interesting. Absurd, more like. Besides, it was dark and foggy. So, somewhat like your version then.
ये दोस्तों हमें एक एक्शन सीक्वेंस बनाना पड़ रहा है कि कैसे कैसे हुआ था। पहले ये चल के आया, उसके बाद ये उसने मारा, और उसके बाद ये स्टैचू भागा। रिप्ले देखते हैं क्या होता है। तो मिस्टर It looks as if Zacharias was Charles की killed the बातों के moment he अनुसार approached the calendar, and killed by the spear from Tukunuman's statue that jumped from its stand and escaped over the wall. तो मिस्टर चार्ल्स की बातों के अनुसार उन्होंने देखा कि स्टैचू को भागते हुए। अच्छा, तो ज़ैकराइस ग्रोस्टक का मर्डर तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और कुछ? Well, Holmes, your conclusions as my consultant? My conclusions are approximate to Sir Charles's testimony. Oh dear, you think the statue did it? Everything points to the fact that the spear was thrown from the pedestal, and Mr. Greystoke appeared not to notice the killer. Indeed. The journalists will be ecstatic about your version. I would like to examine the victim and take a look at his belongings. Oh, you've amused me at least, Mr. Holmes. Very well. I'll grant you authorization for the examination at Scotland Yard, but nothing more. You're still here? Thank you for coming so quickly, Watson. Lestrade already has the victim's body in the autopsy room. I'm always ready to help anytime, Holmes. I'm always ready to help anytime, Holmes. He's not guilty. Calm down here. तो ये है दोस्तों स्कॉटलैंड यार्ड, यहाँ का पुलिस हेडक्वार्टर्स। अच्छा, यहाँ पर कुछ है। अच्छा, ये है ग्रेस्टोक की मतलब चीज़ें जो इसके पास थी। Zacharias had already translated some इतने symbols. सारे डॉक्यूमेंट्स। This spear came from ये the है statue on भाला the pedestal. जो उसके बॉडी के अंदर घुसा था। Money was left inside the wallet. ये तो पैसे, An ordinary pencil. एक पेंसिल। Tissot watch. Swiss. 1855. I'm always ready to help anytime, Holmes. तो यहाँ पर चीज़ों के रिकॉर्ड्स रखते हैं कि कौन क्या हुआ, कौन सी चीज़ों का कब इस्तेमाल किया गया, क्या किया। इस तरफ क्या है? अच्छा, इस तरफ से नीचे जाना है, ठीक है। ओह, यहाँ पर तो एक बॉडी रखी है यार। अरे बाप रे। It was a अच्छा, ये powerful ग्रेस्टोक throw. की बॉडी The है। spear pierced right through the body. हाँ, तो जिसने भी फेंका था ज़ोर से फेंका था कि ये एकदम घुस के एकदम बॉडी के अंदर घुस के एक तरफ से घुसा, दूसरी तरफ से बाहर आ गया। Red eye. It looks like इसका a आँख में serious कुछ प्रॉब्लम है infection. इसका। हाँ, Traces of alcohol were found in the stomach. Apparently Zacharias had been drinking before his death. The coroner mentions in his report some specific cardiac and digestive system damage. These scars are old. अब पीठ पे ऐसे निशान क्यों है यार? मतलब पंजों के निशान लग रहे हैं ऐसे। किसके हो सकते हैं? हाँ? खतरनाक पंजों के निशान है यार।
This is where the spear entered the body. The murderer aimed for the heart. The weapon must have been thrown by a strong and skilled person. चलो यहाँ का काम हो गया। यहाँ पर जो इसका पोस्टमार्टम किया गया, ठीक है। यहाँ पर और भी बॉडीज रखी है। चलो। I'm always ready to help anytime, Holmes. पता है मुझे वाटसन। चलो ऊपर चलते हैं अभी। इस तरह कुछ There's था। no need to disturb Lestrade for the time being. Mr. Holmes? अच्छा, मायन कैलेंडर को तो हमने एग्जामिन नहीं किया, उसको भी कर लेते हैं। ये रहा मायन कैलेंडर। Interesting. What are the symbols here? I'll need to redraw them. I could use this dictionary to translate the calendar's glyphs. They are the symbols that were drawn on the Mayan calendar. The papers from Zacharias' folder. They can help us to translate the Mayan message. और क्या है? कैसे कैसे चित्र बने हैं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसको किसको सिलेक्ट करूँ, कुछ अंदाज़ा ही नहीं मिल रहा। ये पार्ट को मैं स्किप कर दूँ क्या? ये सिंबल कहाँ है? ये रहा।
I don't think so. I should pay more attention to details. Cursed will be anyone who disturbs the sacred temple. They will meet their death by the risen statue. Only the chosen will have mercy. It's not only a calendar, it's a curse. Zacharias Greystoke, a member of the club, was killed as the curse decreed. It's possible that the link between Zacharias and the curse is at the archaeological club. I'll need a search warrant. ठीक है, यहाँ पर तो एनालाइजेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या है? अच्छा, डिस्ट्रॉयड। ओह, डिस्ट्रॉयड अंदर बैठा है। Aren't you supposed to be investigating those cases of yours instead of bothering me? Good day to you too, Inspector. I have a small favor to ask of you, a search warrant to investigate the murder at the club. No, no, and no. ये पता था कि रजिस्टर्ड आसानी से सर्च वारंट देगा नहीं। ये बहुत दिनों से शायद सोया नहीं। ये क्या है? रेड स्टेन। अच्छा, वाइन ही होगा शायद, ब्लड तो होगा नहीं। Since I'm without the warrant, I should find something else to do. By the way, do you know if Sir Robin is currently in town? I have no idea. And why on earth should you even think that I might know that? Well, I believe I may have solved a case about, let's say, a salacious inspector. No, it's not what you think. Nothing dishonorable happened. Go on then. Take your warrant. So he refused to give you the search warrant? Oh no, I've got it. I won't need you for a while now, Watson. I'll see you later. I'm curious to know how you obtained this इतनी warrant. आसानी से वारंट दे दिया। नहीं, यहाँ पर तो हो गया। I'm curious to know how you obtained this warrant. यही तो शेरलॉक होम्स से ये जो लोग गुस्सा होते हैं उनसे भी काम करवा लेते हैं। अब कहाँ जाएगा? क्लब हाउस। कम ऑन। अच्छा, स्कॉटलैंड यार्ड के बाहर आ गए हम। ओके। अच्छा, यहाँ पर तो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, किसी भी एक गाड़ी में जा सकते हैं हम। ओ, ये तो पुलिस की गाड़ी है। ये पुलिस के घोड़े हैं।
अच्छा, तो हम चलते चलते यहाँ से आगे तक भी जा सकते हैं। तो ठीक है, अभी क्लब हाउस चलते हैं। ये पुराना इंग्लैंड है। क्लब Sir Charles, I have a search warrant. I would like to take a look inside the clubhouse. I see. Here's the key, but I do protest. A murder at my club. What a disaster for our reputation. चलो, सर्च वारंट तो हमें मिल गया, शर्लक होम्स ने दे दिया, लेस्ट्राड ने शर्लक होम्स को दे दिया। चलो अब अंदर चलते हैं। बहुत बड़ा क्लब है यार। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ दीवार में कुछ फोटोज है। Who this man is? It's Sir Charles Yellingham, the director of the club. Zacharias Greystoke. ओके, अच्छा, ज़ैकराइस ग्रेस्टोक का पुराना तस्वीर है ये। Guatemala, 1881. I don't think this is a bowls tournament. The photograph कुछ appears to empty be है। faked or damaged. I'll take it. यहाँ पर और कुछ तो नहीं है। Dear Sir Charles, please be advised that we have successfully transferred a new tranche to your club's account. However, the payment period has been reduced to 1 month, and the sum of credit £1,000 due to previous overdue amounts. If you wish to review your account, you should contact the bank manager directly, Mr. Black. अच्छा, Ah, Sir Charles was once a captain in the guard. okay. James Ness and Sons Jewelers, Sir Charles Yellingman, we acknowledge the receipt of your. यहाँ पर भी एक फोटो है। The 50th birthday of Lord Stevenson. लॉर्ड स्टीवेंसन, ओके। Charles Yellingham has a photo. large family. Yellingham, as I said here in front of everyone, you cannot give away this calendar. I want to study it. We have to discuss this matter before the award ceremony. I have already warned the other one of this Zacharias Greystoke. अच्छा, ओहो, तो Zacharias ने मना किया था इसको कि देने के लिए। ग्रेस्टोक ने मना किया था सर चार्ल्स को कि ये कैलेंडर को किसी को मत दो, मुझे इसको स्टडी करना है, ठीक है। Greystoke, the victim. For Mr. Oliver, the company director of royal parties, to organize the award ceremony for our bowling club's most recent competition to the estimation requirements to. To Sir Charles Yellingham from Brittany Lovelace, Chief Accountant at Lloyd's Bank. Dear Sir Charles, our records show that you are once again late, and this for the fourth time in paying the credit you have with our house. Any delay in payment results in a fine of £7 pounds. After studying your proposal, we agree to ceasing a part of your club's collection in payment of the credit, which will be sold in private auction. All raised monies will be reversed against your credit account. It appears that the club is unable to pay its debts to the bank.
मतलब क्लब कर्ज में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ है? The late Mr. Bromsby's collection. ओके सर, The late Mr. Blinkhorn's collection. ये सब क्लब के मेंबर्स थे जिनके कलेक्शन यहाँ पर पड़े हैं। The late Mr. Smith's collection. The late Mr. Sutherland's collection. बहुत सारे क्लब मेंबर्स के कलेक्शन है यहाँ पर। The late Mr. Roberts' collection. तो जितने भी लोगों के कलेक्शन है ये तो इस दुनिया में अब नहीं रहे। यहाँ पर क्या है? These antiques look quite valuable. It appears that it's a part of a gold statue from Guatemala. Solid gold. It's worth a fortune. This piece has been cleanly and intentionally cut. These trunks have just arrived. They're from Zacharias Greystoke's antique collection. Interesting. The men who own these collections are all dead. This metal globe is very impressive. तो ये देख सकते हैं इंडिया, ये ब्रिटिश एम्पायर है, मालाबार। ओके, तो पुराने तब के समय में इंडिया का मैप ऐसा दिखता था। ये चाइना, ये तिब्बत, ये दिल्ली। दिल्ली, अच्छा दिल्ली तब को यहाँ पर समझा जाता था। हाँ, दिल्ली बहुत लंबा था उस समय। Some bits are missing. Some bits are missing. हाँ, यहाँ पर और कुछ है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये तो हो गया ना। Some bits are missing. हाँ, 2 बिट्स मिसिंग है। यहाँ पर कुछ और है। ये तो मिनी बार है। नीचे चल के देखते। Sir Charles, you informed me that you didn't know why Mr. Greystoke was here at such a time. That's correct. I have no idea. What's this supposed to mean? Never mind. You have a fine collection at your club, with one disturbing thing in common. Oh, all the items are from our club members. But only from deceased members, including Mr. Greystoke. Yes, but it is a rule of the club that all our members undertake to donate their personal collections to us in the event of their death. A murder at my club. What a disaster for our reputation.
दोस्तों आज का I do इन्वेस्टिगेशन तो hope that खत्म bone हुआ, has no हम connection to फाइनली बेकर Watson's स्ट्रीट medical पहुंच चुके हैं। practice. ठीक है, तो इसको तो एग्जामिन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों कि आप लोगों को कैसा लगा, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, इससे एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट किया करो, लाइक किया करो, एक लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो प्लीज़ वीडियो पर, तो देख के अच्छा लगता है। और मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ के मैं उसके ऊपर जाके अपने अगले वीडियोज़ को प्लान करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज स्टे हैप्पी।